Just give me quick answer. Is it visible? My screen visible, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Okay, so see. Uh, I hope everyone has installed Turbo C++ on your machine. This is Turbo C++. Suppose you are using any other editor or online editor, steps could be same. So I'm just starting the Turbo, and yeah. Visible? Yes, ma'am. Okay, perfect. So see guys, here this is called the Turbo editor, and it's a DOS base. So you cannot see any kind of graphics and all. I'll tell you, or I'll teach you all the required shortcuts जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे. So थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है in the beginning to use this. Okay, so how to start? So see, this is the blue window, blue screen that and here we will write. So everyone start writing with me. First, two slash, backslash, forward slash. Then just type the name of the program. Like this is our first program. First hello program. And after typing this, save your program. Everyone, do it with me. Save it. So in the file menu, there is a save option, and F2 is a shortcut key. Click on that, and you'll get this dialog box where you'll have C your drive. Then Turbo C is your actual folder. Inside that there will be bin folder where you can save your file. .cpp is an extension, but we will write only .c because we are learning C. And here you can give the name. I'm just giving first.c. That's it. Do it, and let me know once you are done. Everyone should be on the same page. So let me know once you are done. Done, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, then press OK. Okay, after that, what you have to do? See, here symbols are important because this is first time for all of you. Just keep in mind few symbols. Like first, start with the hash symbol that you will find on the 3 1 2 3 4 तो वहाँ पे 3 में press shift 3 hash, then write INCLUBE. Okay, if you have query कि भाई मैम ये क्यों लिखना है कैसे, I will explain each and every word, each and every line, so do not worry about it, just do it with me. Include after that angular brackets, less than, greater than, less than, greater than, where you can type stdio dot h and go to the next line. Do it. Hash include
inside the angular bracket stdio dot h. Done? Okay. ओके आप लोग चैट में लिख रहे हो बट द प्रॉब्लम इज मेरा वो टर्बो ओपन होगा ना तो आई कैंट रीड द चैट. सो कोई भी बोल सकता है चलेगा फिलहाल के लिए बिकॉज आई हैव टू स्विच एवरी टाइम. ओके. नेक्स्ट लाइन अगेन. हैश INCLUDE include angular bracket conio dot h. रिपीट गाइस प्लीज डू नॉट वरी कि मैम ये सब क्या है क्यों लिख रहे हैं. एवरीथिंग आई एक्सप्लेन. Right now just focus on that how to do coding, how to write a program. That's it. And in between do not forget to save your program. F2 is a shortcut. So every time like after writing a one line you can press F2 F2. Done, ma'am. Okay, thank you. Next line is void main and simple bracket. Void main simple bracket. Then open curly bracket. And in programming always keep in mind whenever you open any bracket do not forget to close it. In between you can do many things but when you have opened any bracket always close it and hit tab key. तो सब लोगों के स्क्रीन पे ऐसा होना चाहिए. आज शायद थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है बट डोंट वरी. एक दो तीन प्रोग्राम के बाद मोस्टली आफ्टर 3 प्रोग्राम्स यू विल बी लाइक अ वेरी गुड इन दिस थिंग क्योंकि फटाफट हो जाएगा. Because in every program you have to write this. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. After that, I'll just write printf. That's it. I'm writing print and then f, and then open and close bracket. Do this. यहाँ तक करो सब लोग. After writing, okay, one more thing. Everything should be in the small letters. Do not use capital letter anywhere. जब ज़रूरत होगी आई लेट यू नो कि भाई ओके यहाँ पे कैपिटल है बट एवरीथिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन द कोडिंग यू हैव टू यूज द स्मॉल लेटर्स. printf inside this bracket type the double quotes. Type the double quotes. ये लोग इतना लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं. Okay. printf then brackets inside the bracket double quotes. And here you can write anything. Inside the double quotes, you can write anything. I'm writing hello students. I'm writing hello students. Anything you can write, whatever you want to write. And after writing, always any line when you write, always put the semicolon. Always put the semicolon. Just do this. Go to file and save. And press. अगर ऐसा आता है warning तो just hit yes. Shortcut is Y.
Done, ma'am. Okay, thank you. Okay, so see, this is the program that you can write. Now, so this is your editor where you normally write your code. Now, the time to see the output, right? Whenever we write any program, whenever we write any program, we need to compile it first. We need to compile it first. Why compile? Compiling is a process which will check your grammatical mistake, because ultimately it's a language, right? Because ultimately it's a language. So when we talk about the language, there is always a grammar. Without grammar we cannot write any language. So when you compile this program, it will tell you that is there any grammatical mistake. But in a programming, instead of the grammar, we use term the syntax. Grammar in normal language, and we use syntax. We use syntax also to check the syntax error. We compile the program, because C program has its own rules and regulations which we need to follow. Right? Simple. Just like in each and every English statement, we put the full stop. But here in programming, in C programming, we put the semicolon. This is the first syntax. Save the program and compile it. Right? So let's do it with me. Alter F9 is a shortcut. If you are using any other another compiler, then there might be change in the menu and the shortcut. But those who are using the turbo, do it. Compile Alter F9. और ध्यान से देखना क्या हो रहा है on my screen. Just see. ऐसा आना चाहिए. If you got zero error, zero warning, then tell me कि हाँ मैम हो गया इतना. Means there is no any Done. हो grammatical गया. mistake. हो Done, गया. ma'am. Means there is no Yes, any ma'am. grammar. Sorry. Yes, ma'am. हो गया. Okay. So there is no any grammatical error. Now let's run the program. After compiling, you need to run the program. Control F9 is a shortcut key. Click on the run button. If it asks this, always press yes. See, I am not able to see the output. Why? Now do this with me. Here, write down get ch, open close bracket, and semicolon. Do this. Just write down get ch, Chitvir. Do you have any query? मैम मैंने रन पर क्लिक किया तब वो वार्निंग आई उसमें मैंने यस क्लिक किया बट नथिंग इज हैपनिंग एंड सब ग्लिच हो गया मैं कैंसिल दबा रहा हूँ तो भी कुछ हो नहीं रहा Try to load your turbo again. मतलब आउटपुट नहीं आया, ये वाला स्क्रीन ऐसा है चितवीर? नो मैम स्क्रीन आ ही नहीं रहा वो जो वार्निंग थी ना उस पर मैंने यस क्लिक किया बट नथिंग इज चेंजिंग Okay, just load the turbo again and open your file again. मैम मैम क्लिक मेरी कर रहा हूँ पर स्क्रीन कुछ हो पे ही नहीं रहा मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा अभी इट्स लाइक हैंग हो गया Oh, so that is like it's not the turbo problem. I guess that is something related with your computer. Just press Alt Enter, तो वो थोड़ा small हो जाएगा window. Alt Enter अगर if it works. Are you able to come out from the application यस like मैम file मैम and हो गया? स्मॉल हो गया Small हो बट गया. अभी Now भी close that window ओके and open it again. Load it again. मैम मेरा कर्सर बाहर नहीं निकल रहा उस स्क्रीन से Hit Alter F, Alter F, and then go to the Alter X.
Last option, do this. I clicked Alter X, but it's not doing anything. Uh, okay, do this. ऐसा हुआ होगा शायद, देखो ऐसा स्मॉल विंडो हो गया है. Yes, ma'am. नाउ प्रेस ऑल्टर एंटर 2 बार. It got big, Hmm. it got small. Let's Alter X. Is it working now? Yeah, cursor बाहर निकल गया. I'm closing it. Thank you. Done. Yeah, I'm starting it again. ओके. और किसी और को भी कोई क्वेरी था? यस मैम, मेरा ये हम्म. जो स्क्रीन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एक में तो जैसा आप कर रहे हो वैसा है, दूसरे में मैसेज लिखा हुआ है और फिर मैंने इसको रन किया तो कुछ hello डॉट exe ऐसा कुछ आया. ओके ओके. ऐसा होगा शायद. ऐसा आ रहा है. हाँ, इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मेरे में मैसेज ऐसा लिखा हुआ है. ऐसा है. हाँ हाँ हाँ, ऐसा है. This is good. This is good actually. Here you will be able to see the errors and all. It is good if it is there. बाकी सब लोग भी ओपन कर सकते हैं इसको. Anyways, to close this, just click on this. Alter F3 is a shortcut key, and to make this window big, F5 is a shortcut key. धीरे धीरे होगा, एक दिन में एक साथ सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो शांति से करेंगे. एंड आई ऑलवेज विश कि एरर आनी ही चाहिए, बिकॉज एक बार एरर आएगी तो वो फिर कभी भी नहीं आएगी वो वाली एरर. सो इट इज गुड टू गेट एरर. Ma'am, I got the output. ओके ग्रेट. सो जिसका जिसका यहाँ तक हो गया है, लेट्स कंपाइल इट अगेन एंड देन रन. सो हियर यू कैन सी योर आउटपुट. हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट 3 बार आया बिकॉज 3 times I run the program. Right? See, let's run it again 4 times. Let's run it again 5 times. Let's run it again. See, every time. So here we need to understand that whenever you run the program, you need only the current output, not the previous output. Right? Only the current output. ऐसा हो रहा है सबके साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So मैम इसमें to से बैक कैसे solve, जाना है? क्या इसमें से वापस हमारे प्रोग्राम में कैसे जाना है? ये ब्लैक स्क्रीन से या just hit enter. Okay, now what we need to do to get the only current output, before the printf statement, here before the printf statement, write down CLR SCR, that is for the clear screen, bracket and semicolon. CLR SCR, brackets and semicolon. 3 steps, always follow 3 steps. F2, Alter F9 and Control F9. See, I got my output, the current output. If you are done with these things, let me know. Done, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Okay. Just give me quick acknowledgement in the chat window जिसका जिसका हो गया है quickly कि मैम हो गया ऐसा. मैम हम्म. डाउट बोलो. मैंने ये CLR SCR किया बट अब रन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब क्लिक नहीं हो रहा. क्लिक नहीं हो रहा है? कहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है? मतलब मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ बट जो हमें ऑप्शन आता है ना कि अब रन पे क्लिक करना है अगेन, हम्म.
वो नहीं आ रहा है। शॉर्ट की ओके, इज वर्किंग बट द अपर बार इज नॉट वर्किंग। देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से वो मतलब बिना देखे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। माउस काम नहीं कर रहा है ऐसा मतलब माउस काम नहीं कर रहा है एप्लीकेशन में। नहीं, माउस तो काम कर रहा है, ये बार क्लिक काम नहीं कर रहा है। या क्लिक क्लिक काम नहीं कर रहा है। हाँ वो वही हुआ कि क्लिक काम नहीं कर रहा है। नो वरीज। वो एक्चुअली टर्बो में ऐसा होता है। वो हमने स्मॉल फिर मेरा भी नहीं कर रहा है। देखो व्हेन आई क्लिक नहीं हो रहा है कुछ भी। आई हैव टू यूज द या कीबोर्ड एग्जैक्टली। ओनली। इट हैपेंस। Yes, I need to update it. Anyways, use keyboard. Yesterday this is DOS based, so mostly we will talk with the keyboard only. We won't use the mouse. Right? Okay. Done everyone? I'm writing in the copy. I don't have laptop. That's okay, Thomas. चलेगा अभी के लिए. But just try to arrange the laptop or the computer as soon as possible because फिर बहुत workload हो जाएगा. जितने प्रोग्राम्स हम लोग करते जाएंगे उस हिसाब से. Okay, shall we go ahead, guys? Ma'am, Yes. do we have to write this means codes in the notebook? Yeah, that I'll tell you at the end of the session. Yes, you have to Okay, write ma'am. because it will be considered in your assignment. So how to do that? That I'll show you. Okay, ma'am. Okay. So let's move ahead, guys. So this is your first program. Now we will do the second program. We'll do the second program. So how will we do? How will we start? Go to the file menu, click on the new, and you will get the new window. चलो करो सब लोग. Shortcut key to run the program is Alt F9. मैम इट्स फॉर Sorry, कंपाइलर Control ना। F9. Sorry, sorry. It's a Control F9. Anyways, done, guys. So we will do the second program. Second program is addition of two numbers. And one more thing, whenever you save the program, always give the meaningful name. अपना नाम मत दे देना कि भाई प्रिया वन, प्रिया टू, प्रिया थ्री. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू नहीं. ऑलवेज गिव द मीनिंगफुल नेम ताकि अभी तो एक दो प्रोग्राम है, कल को हमारे 50 प्रोग्राम्स हो जाएंगे तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नो कि भाई कौन सा प्रोग्राम कौन सा है. सो ऑलवेज गिव मीनिंगफुल फाइल नेम. So here I have given add 2 मतलब जैसे या तो फिर sum 2. ओके तो मुझे समझ में आ जाएगा that sum of two numbers and dot c. यहाँ तक सबका हो गया. Yes, ma'am. चलो hit the OK बटन. तो कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी जैसे कि एडिंग लाइब्रेरीज. सो हैश include stdio dot h. Next is hash include new dot h. void main ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट. तो यहाँ तक सेम है. डू इट गाइस. Done, ma'am. सबका हो गया. इस प्रोग्राम में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे आप लोगों को. नया नया नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे. इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोग्राम I'll teach in the next live session. Okay, so just type with me int
बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्मॉल लेटर्स, INT जहाँ पे स्पेस की ज़रूरत है वहाँ पे स्पेस आएगी, INT, NO1, कॉमा, NO2, कॉमा, ANS, एंड सेमीकोलन, हिट एंटर। यहाँ तक कंप्लीट करो, बिल्कुल सेम होना चाहिए सबका। क्या है, क्यों है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन, बट अभी सिर्फ इतना करो। डन मैम। Okay, Done. great. After this, we will write that function CLR, SCR, and semicolon, and come to the next line. Okay. Now printf, again those open close bracket and double quotes. Inside the double quotes, we will write enter number 1, then semicolon and hit enter. डबल कोट्स के अंदर यू कैन राइट एनीथिंग, हाँ डबल कोट्स के अंदर देर इज नो एनी रूल, एनीथिंग यू कैन राइट। एंटर नंबर 1, NUMBR नंबर 1, स्पेस नहीं देनी है, कुछ भी डबल कोट्स के अंदर यू कैन राइट एनीथिंग। Okay, before this E, write backslash n, this backslash n। चलो यहाँ तक हो जाए तो बोलो मुझे। Done, ma'am. ओके, आफ्टर दिस लाइन राइट। ओके गाइज, आई होप सब लोग साथ में कर रहे हैं, एवरीवन ऑन द सेम पेज। यस मैम। Yes, करण, ma'am. Yes. सब लोग करना, हाँ। एटलीस्ट जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग है, प्लीज डू इट विथ मी। ओके, नाउ विल राइट स्कैन एफ। एवरीथिंग आई टीच रिपीटेटिवली, आई एम टेलिंग यू कि जैसे कि प्रिंट एफ में एफ क्यों लिखा, स्कैन में एफ क्यों लिखा, व्हाट इज स्कैन एफ, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन। अभी सिर्फ और सिर्फ हम उसके ऊपर फोकस करें, दैट हाउ टू राइट द कोड। स्कैन एफ, देन ब्रैकेट्स, scanf, then brackets। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, scanf को। इसमें होगा डबल कोट्स, इनसाइड द डबल कोट्स परसेंट बी, ये लिखेंगे हम, परसेंट बी, परसेंटेज की साइन एंड देन स्मॉल टी। आफ्टर दैट कॉमा, आफ्टर कॉमा एंड का साइन लिखेंगे, वी कॉल इट परसेंट, एंड का साइन, एंड देन राइट NO1, जो यहाँ पर लिखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये वाला, दिस, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। एंड बाहर आके सेमीकोलन, हिट एंटर। लेट मी नो वंस यू आर डन। Done, ma'am. Done. ओके, क्या है, क्यों है, सबको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नाउ द सेम 2 lines we will write, but for the second number. See, the purpose of this program is addition of two numbers, right? So what actually we are going to do in this program, addition of two numbers, we will take two numbers from the user. We will take two numbers from the user and we will print the sum. Just like we do in the calculator, right? We provide only two numbers with a plus sign, right?
and we get the output, we get the result. Here we are going to do the same thing. We'll take two inputs from the user, two numbers from the user, and we'll bring the output. Okay, so now these two lines I need to write it again. Printf brackets double quotes slash n enter number टू सेम सिर्फ नंबर वन की जगह नंबर टू आएगा एंड below the printf statement scanf brackets double quotes percent p comma ampersand no2 and semicolon. चलो यहाँ तक कर लो. Done, ma'am. Done, ma'am. Good. Done. After okay, after this जो यहाँ पे तीसरा जो भी लिखा है यहाँ पे आई हैव रिटन ans आंसर ans is equal to no1 plus no2 semicolon. Write down this statement. This is your actually the process part. कौन है ये मीत पंचल आधे घंटे बाद क्यों क्लास ज्वाइन कर रही है? So just write down ans is equal to no1 plus no2 and semicolon. After writing this line, we'll write printf statement again. printf brackets double quotes session. Then I'll write answer is और कॉलम के बाद आई एम टाइपिंग परसेंट डी. आंसर इज परसेंट डी और डबल कोट्स के बाद कॉमा करके ans एंड सेमीकोलन. टाइप इट. मैम एम्परसेंड साइन इस बार नहीं आएगा? नहीं यहाँ पे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा वो भी हम सीखेंगे बट अभी नहीं आएगा. मैम जैसे आपकी ये जो स्क्रीन अभी छोटी है इसको आपने बिग कैसे किया? ऑल्टर एंटर. ओके मैम थैंक यू. चलो बोल दो बताओ मुझे एक बार हो जाए तो. Done, ma'am. चलो हो गया सबका. Believe me Yes, guys, ma'am. you will enjoy the writing, this coding thing. बहुत मजा आएगा लिखने में. At the end we will write get ch open close bracket semicolon and we are done. वो जो close curly bracket किया था वो आता है. So this is your program. Save it. एक बार देख लो कोई गलती तो नहीं है. अगर होगी तो भी we will solve it. So do not worry about it. Let me know once you are done. Done, ma'am. Done? Okay. Done, So ma'am. let's compile the program. Error आती है तो अच्छी बात होगी. So you will get an idea that which mistakes you don't make, you cannot do, you cannot make. I have 0 errors and 0 warnings. सबका ऐसा है या किसी को कोई error आई? मैम आई हैव 2 errors. Yes, good. कौन सी है फर्स्ट वाली error और कौन सी लाइन पे है? मैम ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा, सिर्फ एरर टोटल 2 फाइल 2. कंपाइल किया ना, हिट ये वाला है ना, अब हिट एंटर.
Hit enter. You will get the message box. हाँ यस। आया? बोलो क्या है हाँ, वो? रीड इट स्ट्रिंग लाउडली. और कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग और कैरेक्टर कौन सी लाइन पे है? और 12। 12. एक सेकंड में। ये वाला सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट पे है. मैम ऐसा है दिखा रहा है। कैसा? हाउ विल यू शो मी? मैम वो अरे अपना कैमरा ऑन कैमरे करके दिखा सकते अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट. लेकिन मुझे टेढ़ा मेढ़ा हो जाना पड़ेगा यार, ऐसे तो कैसे दिखेगा? मुझे नहीं दिखेगा बेटा यहाँ से. कैन हैं। यू आप अपना प्रेस? स्क्रीन रोटेट कर दो। ओ बेटा ऐसा नहीं हो सकता. कैन यू सेंड द स्क्रीनशॉट इन द व्हाट्सएप if it is यस। visible for you? Better do it. I'll check there and we'll. ग्रुप में करूँ मैम कि हाँ पर्सनल? हाँ हाँ. नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में हम अच्छी बुरी ओके। सारी चीजें ग्रुप में ही करेंगे. Send your message. Okay guys, so that is, what's your name beta? कशिश। हाँ कशिश, देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें. प्रिंटफ में डबल कोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है. एक ही डबल कोट्स है, राइट? यू नीड टू क्लोज दैट कर्ली ब्रैकेट. यस मैम। सॉरी सॉरी, डबल कोट्स, राइट? ये वाला मिसिंग है आपके केस में. दिस वन. ये हो गया? मैम मुझे भी एरर आ यस रहा है. मैम। हाँ हाँ, करते हैं वन बाय वन, सबका सॉल्व करते हैं. फंक्शन कॉल मिसिंग. हाँ कशिश ये मैम कंप्लीट हो करो. गया जीरो हो गया, एरर। हाँ. दोनों हो जाएगी इसी से. चलो गुड. यस मैम। चलो नेक्स्ट किसका एरर है? जय. जय के किसका एरर है? प्रिंट सिंबल. गेट सी एच के ऊपर प्रिंट एफ होगा जय. इट्स नॉट प्रिंट, इट शुड बी प्रिंट एफ बिफोर गेट सी एच. हुआ? लेट मी चेक. Just write down printf. You have written print, that's why it is giving error. चलो बाकी सबका हो गया. यस मैम। यस यस मैम। मैम। जय सॉल्व हो गया एरर? Anyways, चलो save the program, compile it, no error, and run it. Now we will do many modifications, so do it with patience. Run. Enter number 1. Any number. Mind it, number you have to enter the number. Please do not enter any other character or special characters because it can crash your compiler. Because हमने कुछ भी ऐसा error handle करने के लिए कुछ लिखा नहीं है अभी तक. So keep in mind or be careful when you enter the number. Enter any number. 4. Enter number 2. 6. And I got 10. So I can say that my program is working perfectly fine, right? यस मैम. ओ ओके, किसी को कोई क्वेरी या डाउट है तो मैं फिर मैम आगे. हाँ बोलो. मैंने फर्स्ट नंबर डाला तो उसने पूछा एंटर नंबर 2 और डायरेक्ट हम्म. सीधा आंसर इज -15998 बोल दिया। अच्छा, आपने स्कैनएफ में अम्परसेंड का साइन नहीं लिखा होगा. चेक योर कोड. इन द स्कैनएफ स्टेटमेंट अम्परसेंड का साइन शायद मिसिंग होगा. Is that sign is there? Ampersand sign is there?
It's again glitching, ma'am. Oh. Vishakha, what's the query? मैम मेरे 11 स्टेटमेंट में ऐसे लिखा आ रहा है कि अनडिटरमाइंड अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, और 13th में But फंक्शन कॉल मिसिंग। बेटा प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप. मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी बिना श्योर देखे. मैम श्योर। प्लीज. चलो. So, okay, so let's do some changes so you'll get to know कि भाई okay ये करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा. So compile. हम थोड़ा सिर्फ नंबर्स चेंज करते हैं. 10, 100, आई कोड 110. ठीक है, मेरा प्रोग्राम तो सही सही काम कर रहा है. सी गाइस, दिस पोर्शन ध्यान से सुनना. दिस पोर्शन, this is your input section. Now we know input, process and output, right? This is your input section where you are taking the input from the user and you are giving the input to the system. So printf and scanf, both the all these four statements are something related with the input. After input, we did the addition process. So this is your addition process part. This is your process section. And after process, you want your output. So you simply mention the printf statement where you are just displaying your answer. That's it. समझ में आया? Everyone? Yes, ma'am. हेलो. बोलो तो सही यार. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. ओके ओके. So after this, see, and when you run the program, this screen, this black screen, we call it output screen or console screen. अब in next, like for next 1 year, हम लोग जितना भी साथ में है, तो mostly I will use the console screen. So console screen का मतलब होगा this is your black screen or your output screen. This is your console screen. This is your editor. Got it? Yes, ma'am. Great. Okay. So अब what you have to do for next 2 days, आप लोगों को क्या, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब थर्सडे को होगा, राइट? आई गेस थर्सडे वी आर गोइंग टू मीट नाउ. नो, वेडनेसडे, सॉरी, वेडनेसडे वी आर गोइंग टू मीट. वेडनेसडे वी आर गोइंग टू मीट. तब तक आप लोगों को क्या करना है? दिस प्रोग्राम यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. कैसे लिखेंगे नोटबुक में? देखो, in the index, just sorry, that index in your notebook, इस लाइन को नाम दे देना 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. See, why this indexing? यहाँ पे कुछ गलती हुई. 7, it should be 7. क्यों? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? We'll write the first line, explanation of first line, explanation of second line, explanation of third line. So that way you will know the importance and the use of each and every word we have written in the program. Everything. कुछ भी जाएगा नहीं, कुछ भी मिस नहीं होगा. So you will have a clear idea about the concept of the programming, concept of how to write the code. So ये चीज़ आपको 2 दिन में ख़त्म करनी है.
बाय वेडनेसडे. सो वेडनेसडे हम लोग लाइव सेशन में क्या करेंगे, आई विल एक्सप्लेन वन बाय लाइन एंड यू जस्ट राइट डाउन कि भाई ओके वन फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है, सेकेंड लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई हमने बैकस्लैश क्यों किया, डबल कोट्स क्यों किया, परसेंट डी क्यों लिखा, परसेंट क्यों लिखा. Because when we do the programming, you should know the meaning of each and every typed letter, typed character. जितना भी इनपुट हुआ है, मतलब कीबोर्ड के थ्रू कितना भी आपने इनपुट, एवरीथिंग यू शुड नो. भाई हैश क्यों लिखा, वाई हैश, यू शुड नो वाई हैश, व्हाट इज हैश. void, भाई void क्यों लिखा, भाई curly bracket क्यों लिखा. So once you will have a clear cut idea about the each and everything, it will become easy for you to write the program. And the more easy would be, you will be able to solve the errors. अच्छा right right, ये नहीं किया ना इसलिए ये वाला एरर है, ये नहीं किया ना इसलिए ये वाला एरर है. सो इट विल बी easy. बट ये चीज़ कहाँ पे करनी है हम लोगों को, where you have to do this. Guys, नोटबुक. नोटबुक, यस नोटबुक में करनी है, यहाँ पे नहीं. यहाँ पे तो सिंपल प्रोग्राम होगा. सो इन द नोटबुक यू हैव टू डू दिस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके. मैम आप हमें नोट दिस भेजोगे इज इनफ उसमें फॉर से टुडे. लिखना है हमें. यू कैन टेक, नहीं नहीं नहीं, अपने नोटबुक में लिखना है बेटा. अपनी नॉर्मल एक नोटबुक बनाओगे ना आप सी प्रोग्रामिंग की. हाँ. सबको एक नोटबुक बनानी है, हाँ भाई. हाँ मैम. हाँ नोटबुक बनाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, वट एवर आई टीच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. जस्ट लाइक इन आर ऑफलाइन लेक्चर्स कैसे करते हैं हम, कि भाई कुछ बोर्ड पे लिखा है तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, दैट वे. सो स्टार्ट फ्रॉम दिस एडिशन ऑफ टू नंबर्स. इंडेक्स में 1 2 3 4 5 और हर एक लाइन. और नेक्स्ट लेक्चर में विल राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन. सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ट्राई विद द डिफरेंट सिंबल्स. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द प्लस यूज माइनस, परसेंटेज का साइन, स्लैश साइन, एस्ट्रिक साइन, एंड जस्ट सी द डिफरेंस. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. So I guess that's enough for today. More we will talk on the Wednesday, right? Okay, ma'am. Okay, guys. Okay, guys. Bye. Okay, Take ma'am. care, everyone. Bye. Take Thank care. you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.